Hello Munchkins, what is up? How are you all? In case you're new here, hi, I'm Sakshi and I create content on makeup, beauty and fashion. In case you are interested in these kind of videos and new here, then please take a moment and subscribe to my channel. You will have a great time here. And you guys must be wondering कि एकदम से अलग intro कैसे हो गया? Munchkin कहाँ से आया? So in this video, I'm going to recreate this makeup look from none other than Himadri Patel, and I really love her as a content creator, as a YouTuber. अगर आपने हिमाद्री की वीडियोस देखी हैं तो she has this intro, hi Munchkins, what is up, and ये सुनने में इतना प्लीजिंग सा लगता है तो आई थॉट से बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होगी मेरे लिए ये बोलने की. सो या हियर वी गो. थंबनेल और टाइटल में से तो देख ही लिया होगा कि मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ हिमाद्री पटेल का मेकअप लुक, एंड दिस मेकअप लुक इज़ द सेम विच शी कैरिड इन हर दीदी की शादी. एंड उसमें शी वोर दिस सिल्वर ब्लू sari which is so gorgeous, so pretty, and uspe she did this makeup, this exact makeup, and you can see the eye makeup as well. It has a hint of silver. I really don't do silvers because मैं ज़्यादातर gold tones में रहती हूँ, and she did the same thing in her video. She has used a toner which is from Lakme, and I'll be using this rose toner because as you guys must know that Gulab Gel is my favorite as a toner because it suits my skin perfectly. Just dabbing it onto my skin so that it absorbs properly. A face mask, but I have already done all that in like yesterday. मैंने कल ही एक थोड़ा पैम्परिंग सेशन रखा था अपने लिए, तो उसमें मैंने फेस मास्क, शीट मास्क सब कुछ यूज़ करा था, फेस स्क्रब एंड ऑल. तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी क्योंकि हफ्ते में 2 बार लगाओ तो बेटर रहता है. अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर क्योंकि फेस मास्क ऑलरेडी लगा रखा है. अगर आपको लगाना है तो प्लीज़ लगा लेना. नेक्स्ट शी हैज़ यूज्ड अ प्राइमर. आई एम यूजिंग दिस इनसाइड 3-in-1 and just apply it where she has some texture like nose area, obviously forehead, chin area, and just massage it very well. So next she has used Milanica foundation. I'm doing the same, and this is the Conceal Plus Perfect, but still we have to use a concealer. I'm just using it in a dot motion. Just blend it very well so that it looks like your skin only. Next she has used this Wet n Wild concealer. I'm doing the same, applying it under my inner and outer corner of my eye so that my face looks elongated, and some on the lids, mouth area because I do have pigmentation there. Blending is the key guys to the flawless base, so just blend and blend. Guys, she have used like this Wet n Wild concealer and उसके ऊपर Huda Beauty का concealer and उसके ऊपर Colourpop का highlighter to just accentuate her features. But what I'm gonna do is I will skip the Huda Beauty one, and because Wet n Wild की coverage मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, and इसके बाद I'll directly go with my LA Girl Pro Concealer to highlight my features because I don't have the Colourpop one. You can see that foundation and concealer are now blended. And रानी का foundation है वो जब तक पता नहीं पूरा face complete नहीं हो जाता मेकअप का, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता वो. I don't know why, for what reason. To highlight my features, I'm going to use this LA Girl Pro Concealer. This is in the shade Natural. Just applying it on all the places where I want to highlight it on my face. And guys, links of all the products will be mentioned in the description below, so please go and check that out. If you wanna buy any product, then you can surely buy it from the link. As the next step, she has just quickly baked up her eyes, and I'm going to do the same by using the Maybelline Loose Powder. She has done her eyebrows, and eyebrows are must. Without eyebrows I can't even imagine my makeup. And she also said it बिना फिल करे ऐसा लगता है कि eyebrows तुम्हारी है ही नहीं. Pictures and all इन सब में तो बहुत ही बेकार लगता है. So you should definitely groom your brows. First you just need to comb out your brow hair. And also this would be the first impression of this pencil because ये मुझे कल ही आई थी अपने PR में, and I am using it today only. Spoolie is great. वाओ, आई एम लविंग द शेड. कैन यू सी द डिफरेंस ऑलरेडी? मैंने बस बहुत थोड़ा सा फिल करा है एंड एकदम शेप भी नहीं दी है प्रॉपर. जो मेरी आईब्रो थी उसी को मैंने हल्का सा ग्रूम कर लिया एंड इट इज़ लुकिंग सो परफेक्ट. लाइक कैन यू सी
start by using this neutral shade right here, which is in the shade Crash, and I'll pick this up on a Morphe M330 brush. I'll blend this color very well into my crease. I'll use a lighter brown color to deepen up my crease. I'll pick up this cool brown color from the Morphe Jaclyn Hill palette and I will deepen up my crease. My glitter, I'll be using this beautiful Lime Crime Diamond Dew glitter in the shade Starlight, and it is holographic, so when the light hits it reflects different shades and it just looks very pretty. I'll take a flat tiny detailer brush and I'll pick up the glitter on this, so I'll apply this right. Friends, like this one is the exact copy of what Himadri Patel did and दिस इज़ लुकिंग अ बिट गोल्डनिश. तो अभी मैं इसको भी ठीक करूँगी क्योंकि जो मेरा वो वाला पिगमेंट था वो इस जो टोन था जो मैंने बेस टोन लगाया था वो उससे मैच नहीं करा, तो ये गोल्डन निकल के आ गया. बट वो वैसे वो स्टारलाइट का शेड ही है. तो उसके ऊपर मैंने जब ये वाला यूज़ करा तो ये बन गया ये वाला शेड. एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल लाइक आर्टिस्ट्री, मेकअप आर्टिस्ट. So yeah, अभी मैं इस वाले को भी एकदम ऐसे बनाती हूँ. Guys, so eyeshadow is done as you can see. Using the Anastasia waterproof creme color in Jet. This is a beautiful eyeliner and I'll create a tiny little wing. I'm done with my eyeshadow and eyeliner and now I'm going to use mascara, and this mascara is from Manish Malhotra. Beauty range is like awesome. And for mascara I'll be using the Pixie Lengthy Fiber जो ब्रश है उसके जो ब्रिसल्स हैं वो इतने ज़्यादा पॉइंटेड हैं कि आपके जो लैश है ना उसके एक हेयर को एकदम अच्छे से कॉम्ब आउट करते हैं वो. My lashes, I'll be using the PAC M77 lashes along with the PAC. So guys, now my eye makeup is complete and अभी बस काजल रह गया है according to me, but माधुरी पटेल ने काजल नहीं लगाया है अपनी लुक में, which is like sad to me because without काजल any look of mine is incomplete. So अभी फ़िलहाल हमें माधुरी की लुक रिक्रिएट कर रहे हैं तो अभी मैं नहीं लगाऊंगी. एंड में देखते हैं अगर ऑफ लगेगा या फिर मेरे ऊपर सूट नहीं करेगा तो मैं काजल लगा लूँगी. एंड अभी मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप इज़ अप्लाइंग ब्रॉन्जर एंड ब्लश. Looks like, and I really love the shades. It has two shades, one the darker one and the one the lighter one, and I really love to mix them both and apply it. For highlighter I'll be using the Becca Champagne Pop and I'll apply that on the highest points of my face. Can you see the glow on my face? I am really loving it, trust me. अभी लिप्स पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट अगर मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लुक आने वाली है ये. एंड कैन यू सी द ग्लो? आई मीन शुरू में मेरे को बेस पता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मैंने जैसे आपको पहले बताया था मिलानी का फाउंडेशन है जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता मुझे बहुत बेकार लगता है. बट वंस इट इज़ कंप्लीट लाइक आईज लिप्स एंड सब कुछ हो जाता है उसके बाद इट लुक्स बॉम्ब. आई एम रियली लविंग इट. And you can actually wear this look to any wedding, to any, you know, if you're a guest, if you have a family function, and आपकी खुद की सिस्टर की शादी हो. It's like हिमाद्री की दीदी की शादी थी तो she carried this exact look on her wedding, and this is such an appropriate look for weddings and I am really loving this. You should definitely try this out. And yeah, अब US फटाफट से लिपस्टिक कर लेती हैं and I am going to apply a nude pinkish lipstick. So my lipstick is complete now as you can see and my makeup is now looking perfect. I think it is resembling with the Himadri Patel's makeup exactly, like she did this exact same look and I am really loving it how it